Okay, so far we have been looking at how do we learn the distribution given the loss function. The loss function is we talked about different loss functions. हमने बात की थी 1-0 loss function की, हमने बात की थी root mean square loss की, mean square error की, or absolute mean absolute error की, right? So this is the learning problem we had. So given hypothesis function, we want to find an hypothesis function so that we can learn this distribution P of x, y between x and y. So we assume that with the data points we have, they're drawn from some unknown distribution P of x, y, and we want to learn this distribution from the data points, right? And to find the loss, to quantify the loss between what is being determined by our hypothesis function and what the actual value is, we introduce some loss functions, right? So we have different loss functions to evaluate performance. So 0-1 loss की हमने बात की थी, हमने फिर मीन स्क्वायर एरर की बात की थी, और हमने रूट मीन स्क्वायर एरर की बात की थी, and then finally we concluded with absolute loss function. So far we have defined loss functions and we know that we want to learn the distribution. Let's combine these two and formulate a learning problem. Jizen? सर इसमें आपने ये बताया था कि जो 0-1 लॉस है, it actually tells us के कितनी मिस्टेक्स हो रही हैं in total in my sample जो मेरा आउटपुट आ रहा है. तो ये जो बाकी सारे हैं ये क्या सिग्निफाई करते हैं, इस पे आपने बात नहीं की थी. देखिए इंट्यूटिवली क्या बता. हाँ बिल्कुल. So जो 0-1 लॉस है, वेरी गुड क्वेश्चन. So 0-1 लॉस जो है वो सिर्फ बता रहा है कि लॉस मिसमैच है या नहीं है, right? It is simply counting the number of mistakes, right? Loss है, sorry, mismatch है तो 1, mismatch नहीं है तो 0, right? अगर perfectly match है तो तब loss 0 आएगा, अगर हल्का सा mismatch है तो loss 1 आएगा. And due to this step-like nature of 0-1 loss function, we do not use it. At times we use it in classification, but we don't use it in regression. Instead, the other losses, they are quantifying the total loss. So h of xi minus yi, this quantifies कि ith sample के लिए आपके पास जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वो yi से कितना दूर है, right? So this loss is quantifying, is also quantifying the deviation, the distance of the predicted output from the actual output. जबकि 0-1 लॉस जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है कितना दूर है, अगर हल्का सा भी दूर है तो कहेगा वो 1 है. Okay. So all the losses are take into account the difference between h of xi and yi. Squared loss में यही है, RMSE में भी इस तरह ही है, और even absolute error के अंदर भी. So it quantifies, it takes into account the difference between h of xi and yi. ठीक है जी? जी सर. So 0-1 loss. So yesterday I was having a discussion with one student Zoom के ऊपर, हमजा के साथ. He was asking the same question, right? So 0-1 loss में मसला क्या है? 0-1 loss is not differentiable because why do we need differentiable function? Later we will run some algorithms in which okay, what is the idea of learning? We want to minimize loss function. We want to find h of xi for which the loss is minimized. Loss को minimize करने के लिए we need to find those parameters of the model for which the loss is minimized. अब इस minimization process के अंदर we need to take gradient of the loss function with respect to parameters, gradient of loss function with respect to inputs, and so on and so forth. So for these gradients, so we need to compute these gradients. For the computation of these gradients, we require these loss functions to be differentiable. ठीक है जी?
Okay. So moving forward, let's formulate this learning problem in the form of optimization problem. So we wish to select hypothesis machine from the hypothesis set H such that we'll pick that model, we'll pick that hypothesis function for which the loss is minimized. This is what we want, right? Learning medium, we wanted to find hypothesis class for which we are close to the distribution that maps the distribution or that minimizes the loss function. Agree? Any questions? हमने learning को ऐसे कैसे लिख लिया? Excuse me, sir. जी पूछें. So ये जो hypothesis की classes हैं जो लिखती हमने जो पढ़ी हुई है बस एक certain type of classes उनकी सिर्फ उन्हीं में से कोई एक case apply होता होगा या फिर like ऐसा भी हो सकता है that we develop a case of our own or something of that sort. Okay. Mostly we use the well-known models we have. For example, we will be using polynomial regression. Okay, we will learn that first we identify the nature of problem. Right? From the nature problem, we will select कि हमारे पास ये class of functions, class of models हैं, which we can potentially use for this problem. And once we have shortlisted the models, the hypothesis class, and then we find loss function for each hypothesis class. Obviously, you can build your own model. अपना build कर सकते हैं आप. ठीक है जी sir. Okay. Yeah, I'm back here. Okay. So this is the optimization problem we have. Now recall, we assume that data points are drawn from some unknown distribution p of xy. We can come up with a function h after solving this minimization problem that gives low loss on our data. How can we ensure that hypothesis will give low loss on the input that is not in D? Data points लिए आपने उससे कहा कि तो low loss दे रहा है, right? But how can we ensure that the hypothesis class gives low loss on the input जो कि आपके डिक्शनरी में नहीं है? अगर if your D is an IID, identically and independent distributed representation of a distribution. If it's a true representation of a distribution, then we can claim that this hypothesis will give low loss on every point, for every point from the distribution, right? But if the data points are not a true representative of the distribution, we cannot claim or we cannot generalize the given hypothesis for every point in the distribution. And that's why in machine learning, there's a lot of focus on collecting the data or designing of experiments for collecting the data so that we capture all the variabilities in the population.
But how do we ensure this, that hypothesis you select will give low loss on the input that's not in D? So let me illustrate this with the help of one example. Right? So let us consider a model H, which is trained on every input in D. So, okay, we have a hypothesis function जिसके पास सारी इनपुट्स का लुकअप टेबल है, राइट? जो भी इनपुट हम उसको एक्सेस देते हैं, वो देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एक्चुअल आउटपुट क्या थी, वो आपको उसका एक्चुअल वही लेबल रिटर्न कर देता है. अगर मैं इस हाइपोथेसिस फंक्शन के लिए 0-1 लॉस निकालूं तो क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि कोई मिस्टेक्स नहीं है. कोई मिस्टेक्स नहीं है, राइट? Every time it is giving the correct output, right? लेकिन अगर मैं इस हाइपोथेसिस फंक्शन को इनपुट को ऐसे दे दूं which does not belongs to D, उस केस में ये 0 देगा. Because it's a memorizer. This hypothesis function has not seen this input before, right? In this case, the loss will be 1. Okay. तो हम कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल 0 लॉस दे रहा है आपके डेटा के ऊपर, right? So this model is fit to every data point in D. Okay. Or I can say this is an extreme case of overfitting, right? हम उसके बारे में बात करेंगे कि ओवरफिटिंग होती क्या है. This is extreme और फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ ओवरफिटिंग आप कह सकते हैं. आपने देखा कि आपने उसको फिट किया हुआ है हर पॉइंट के ऊपर जो कि डी के अंदर है, but it's not giving you it's not a meaningful model, right? It's not a useful model. You cannot use it because it's giving 0 output. It's giving very large error for any input that is not part of D, right? So now we can answer the question, how can we ensure that hypothesis H will give low loss on the input not in D? The idea is, हम डेटा को स्प्लिट कर लेते हैं. हमारे डेटा D है ना, we split it into 2 parts, training data and testing data. And let's see how do we use these 2 data sets to find hypothesis function that is generalized enough for inputs not in D. So idea क्या है? We usually split D into 2 parts, training and testing. We use 70-30 or 80-20 or 90-10. Usually I prefer 70-30 is a good division of the data. It depends on nature of application, it depends on nature of the data, but usually we split 70-30 ratio. Okay. What's the objective of this train test split? Any idea? हम कर क्यों रहे हैं? ट्रेनिंग डेटा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उस पे एक दफा मॉडल ट्रेन कर लें और फिर कुछ डेटा हम सैंपल ऐसे रख लें जहाँ जिस पे हम टेस्ट कर सकें, तो इसलिए हम स्प्लिट कर लेते हैं इनको. बिल्कुल. इसी तरह वैलिडेशन डेटा है, जो ट्रेनिंग डेटा किया होगा उस पे वैलिडेट करने के लिए वैलिडेशन डेटा यूज करेंगे, और जो फ्यूचर में कभी डेटा हमारे पास आएगा उसको हम एज अ टेस्ट डेटा लेंगे. बिल्कुल ठीक. वेरी गुड. जैन सर यहाँ पर मतलब जब आप डी के डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं, तो अगर आप इसको इंश्योर कर लेते हैं तो आप वो कैसे इंश्योर करेंगे कि डी के अलावा कोई और डेटा आ रहा है तो फिर मॉडल ठीक आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो तो फिर भी आप इंश्योर नहीं कर पाएंगे. Wasn't this what we were trying to prove in the first place? जी. ओके. सो अभी आपका ये क्वेश्चन अभी हम आंसर कर देते हैं विद इन 2 to 3 मिनट्स इंशाल्लाह. ठीक है. The other participants, South जी बेटा. Sir, I wanted to make a clarification कि जो पिछला डेटा था मेमोराइजेशन वाला, उसमें क्या नहीं थी कि वहाँ पे ट्रेनिंग हो ही नहीं रही, उसमें सिर्फ हमने 1-to-1 मैपिंग लाइक मैनुअली की हुई है.
ऐसा हम कर सकते हैं assume? एग्जैक्टली वो एक तरह से ट्रेनिंग है ना, उसने लर्न कर लिया कि ये इनपुट आएगी तो मैं ये आउटपुट दे दूंगा, ये इनपुट नहीं आएगी तो मैं जीरो, मेरे पास है ही कुछ नहीं है, आई डोंट नो। उसमें जो लाइक इस तरह भी हम यहाँ पे करें 70-30 वाला, हम पहले प्रॉपर ट्रेन कर रहे हैं उसको और फिर हम उसको किसी और डेटा पे लाइक टेस्टिंग डेटा पे हम उसको टेस्ट कर रहे हैं। पहले वाले में हमने कोई मॉडल ही ट्रेन नहीं की, हमने लिटरली मैन्युअली 1-to-1 कर दिया। इज दैट्स व्हाट हैपनिंग? बिल्कुल। लेट्स से यू अप्लाई मेमोराइजर हियर, राइट? सो अगर हमने मेमोराइजर यहाँ पे यूज किया तो मेमोराइजर वुड बी गिविंग जीरो लॉस फॉर ट्रेनिंग and very large loss on testing, right? अगर आप सिर्फ ट्रेनिंग यूज कर रहे होते तो आप कहते हैं मेमोराइजर तो बहुत शानदार एक लर्निंग एक हाइपोथेसिस फंक्शन है क्योंकि जीरो लॉस दे रहा है, राइट? बट having this train test split would allow us to reject this claim that memorizer function is not a good hypothesis function, it's not a good model, क्योंकि वो टेस्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा एरर दे रहा है। And the same is true for any bad hypothesis function. As the name suggests, train. So we're using this blue bit, the training data, for learning, right? And once we have the model, once the parameters of the model are learned, once we have a mathematical description of hypothesis function, once we know the mapping, then we use this mapping to evaluate the performance of the model on testing data. So model has not seen the testing data during the learning process. Right? That's why we say we expect the model to behave good for the data which the model has not seen during the training process. ठीक है जैन, मैंने आपको क्वेश्चन में आंसर कर दिया। ठीक है जी, okay. How do we carry out splitting? Ideally, we should split in a way that we're capturing the variations in the distribution. It means we should be capturing variations in both the training and testing data. Usually we carry out splitting using IID sampling, random sampling of the data. And if we have time series, we split data with respect to time. For example, if we have a data something like, say, temperature per day for a year, right? So we say for the first 9 months we used for training, for the next 3 months we just use for testing. We split with respect to time. As I said earlier, we can only use the data set after deciding on the model using training data set. Once we know the model, once we've learned the model, we can use the model to evaluate the performance on test data. Okay, let's see this learning problem. So we had this optimization problem. So now I have incorporated the training data in the optimization problem. So what we want is, we want to pick H star such that we evaluate loss on every point. Sorry. This is the loss on every point. Which point? Point in the training data. And we sum over all the training data points and we divide by the number of training data points. So this DTR is, since DTR is a set, and you take a mod of this, this is cardinality of the set, number of points in the training data. So now we want to, now we choose H star
from the hypothesis class H that minimizes the loss function on training data. And once we have this H star, we evaluate the loss in the testing data by evaluating loss function on every point in the testing data. So loss function for every point in the testing data given H star, sum over all the points in testing data, it's the sum, and divide by the number of data points in the testing data. See the difference between these two. So in the first one, here we have loss of xy given H, and here loss of xy given H star. So we have determined H star now. So let's talk about generalization loss. So we define the generalized loss on the distribution P from which the data D is drawn as the expected value or average value, or we call it probability weighted average to be precise. So what is the loss? What is the generalization loss? We denote it by epsilon, expected value of the loss function given H star, right? So this expected value is irrespective of the training data, and losses over all the points in the distribution. Ideally हम चाहते हैं कि ये वाला loss minimize हो. We want to pick H star for which this generalized loss is minimized, right? Under the assumption that data D is IID, so loss on testing data, since we have not used testing data in the learning process, it serves as an unbiased estimator of the generalized loss epsilon. This simply means that this loss on testing data converges to epsilon with an increase in this data size. That is, if you keep on increasing data size, it means you're capturing all the points in the distribution. Testing error would approach as generalized error, generalized loss. Ji Hamza beta. I have to ask about the टेस्ट सर जो आपने टेस्टिंग पर जो लॉस बताया सर उसके अंदर हम लोग we calculate our loss for each hypothesis on every data point and then sum it up, right? Yeah. ठीक है सर बस मैंने उसकी नोटेशन कंफर्म कर ली. So you're talking about the first one during learning, right? Yes sir. Yes sir. जी जी sure. So here अगर मैं इसको ज़्यादा precise करके लिखूं तो I can write it like this. I can add subscript I and then each xi yi belongs to data. Right? Yeah, for every point in the training database, obviously. Design. सर यहाँ पर the loss given H and the loss given H star, इसका क्या मतलब है? Given H, like how is that linked to given H? का क्या मतलब है? जब हम evaluate करें जी सही, जो एक्सप्रेशन है हमारा आपने लिखा है ना लॉस ऑफ एक्स वाई गिवन एच, सो एच तो हमारा वो वाला फंक्शन नहीं है लाइक जो कि हमने सिलेक्ट किया हुआ स्पेसिफिक जो हाइपोथेसिस क्लास का में से बिलोंग करता है. So this is learning, right? जहाँ पे सिर्फ h है वहाँ पे learning हो रही है, right? We do it for every h, right? And we pick the one, a star is the one for which this is minimized. ठीक है, सही है. And once we have H star, we use this H star to find, we use this H star here. Perfect. Okay. So learning के अंदर we have this minimum as well. We have this optimization problem. हमें loss को minimize करना है.
हमारे पास जो था वो वी हैड दिस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। मैं सिर्फ लॉस फंक्शन को लिखती हूँ। जो लर्निंग वाला है उसमें जो मेरे पास जो कैपिटल एज वाली क्लास है उसमें से हर एज के ऊपर अप्लाई करके मिनिमम लूंगा ना। जी यस, बिल्कुल। मेक सेंस, थैंक यू। Okay, let's talk about one more splitting. At times, we separate it into three subsets. That is training, or training को हम training test, और training को हम further split कर देते हैं training और validation के अंदर. So, okay, why do we need this? Why do we need validation data? और data होता क्या है validation data? To answer this question, validation data is used to validate the loss for a function h that is determined using the learning on the training data set. If the loss in validation data is high for given h, the hypothesis or model needs to be changed. Okay, what is the idea? Maybe let me try to explain with the help of one example. Let us suppose we are doing a very simple one-dimensional curve fitting. I will spend 5 minutes on this, but this is important just to illustrate this concept. इसको हम बाद में दोबारा revisit करेंगे. Can this is just a first glimpse? Let us suppose we have an underlying model f of x is equal to say x cube, right? And you know x cube looks like something like this. Agree? So आपने क्या किया? आपने कुछ data points लिए. You don't know the actual curve, right? You collected data, you get some of these data points. Right? हाँ जी, blue curve नहीं है, blue curve हम हटा देते हैं. And once you have the data points, you know this is x and this is y. You have these 7 data points, for example. Now, when you plot the data points, you may say that, oh, it looks like a linear trend, so I can fit a straight line, something like, hang on. You may argue we can fit a straight line, something like this, and this would be a good model, right? Or some of you may say that x square could be a good representative. So possible candidates would be x, x square, x cube, x4, x5, x6, x7, and so on and so forth. Right? Now to find whether it is x, x square, x cube, x4, so क्या change हो रहा है? Order of polynomial change हो रहा है सिर्फ, right? कि कौन सा polynomial का order बेहतर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To find this order of polynomial, this order of polynomial is known as a hyperparameter. Right? और आप कह सकते हैं कि आपका जो hypothesis class H है, उसके अंदर different hypothesis models पड़े हुए हैं. So H looks like this. X भी है, x square भी है, x cube भी है, and so on and so forth. So xn भी है. Agree? So, and all of these different models are controlled by just one variable, which we call order of polynomial or hyperparameter है वो एक. So one option is कि आप start x से करें और उसको टेस्ट करें, x square फिर उसको टेस्ट करें. So to incorporate कि आप hyperparameter की tuning को learning का हिस्सा बना दें,
we use validation data. We use validation data to learn the hyperparameter. We start with X, we train on training data, and we test on validation data. अगर loss कम आ रहा है, तो we can use X. Again, we start with X squared. अगर X squared अपने use किया और उससे validation loss जो है, validation data के ऊपर loss है, वो X squared से कम आ रहा है, you prefer X squared, right? And similarly, if you start with X cube, उस पे loss सबसे कम आएगा validation data के ऊपर. You shortlist X cube. When you select X4, the loss would start to grow. अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे हम कहते हैं कि order of polynomial, let's call it M, कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, If you plot the loss on training data, तो कैसा loss आएगा? It would keep on decreasing all the time. क्यों? For example, if you use X7 polynomial would fit something like this. बिल्कुल उसको डेटा पॉइंट्स को फिट कर जाएगा, right? Overfitting हो जाएगी. But validation data, which has not been seen by model in the learning process, on validation data, the loss would be something like this. वो 3 तक decrease करेगा और फिर increase करना शुरू कर देगा. Then you can say that 3 is the optimal order of polynomial for this example. Hamza, जी बेटा. जी सर, मैंने ये कंफर्म करना है कि यहाँ पे आपके सारे लॉस फंक्शंस के लिए डिक्रीज आएगा या फिर ये कोई स्पेसिफिक लॉस फंक्शन होगा जिन पे डिक्रीज आएगा, कुछ के ऊपर इट वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड और समथिंग लाइक दिस. When we're talking about polynomial regression, we usually use either mean absolute error, RMSE, or mean square error. Obviously, not 1-0 loss. All right, sir. जी. Sir, I wanted to ask something. ये जो validation data, testing data, पे इसमें फर्क क्या है main? Like, aren't the both of them doing the same thing? नहीं. So once you have chosen कि x cube है, right? आप x cube के साथ जो एक constant लगा हुआ है, right? So okay, it's not ax cube, but it's simply ax cube plus bx squared plus cx plus d. ये polynomial होगा ना? Right, now you have learned parameters a, b, c, and d, and now you want to evaluate performance. That performance should be evaluated on testing data. For tuning hyperparameters, we use validation data. To evaluate performance of the model or to evaluate its generalization, we use testing data. ठीक है? Can you please repeat because it is not clear? जी जी बेटा, मैं दोबारा clear कर दूं. ठीक है, ठीक है. For example, maybe there's one more example, right? We have a neural network, right? And we want to find out, maybe मैं इसको skip करता हूँ. Let's talk about polynomial regression again. So हम कहते हैं कि हमारे पास 2 problems हैं. How to find order of polynomial and how to find parameters of the best polynomial. Right? The second question है, this is learning, right? Once you pick आपने set कर लिया कि x square है, this is then you can use data to learn the parameters. Okay? But how to find the order of polynomial, right? आपने एक polynomial को select किया, आपने कहा कि उसके ऊपर ये loss आ रहा है, आपने order change किया, फिर loss निकाला,
आपने ऑर्डर चेंज किया, आपने फिर लॉस निकाला, राइट? लेकिन लॉस आप किसके ऊपर निकाल रहे होंगे? यू विल राइटिंग लॉस ऑन द वैलिडेशन डेटा, and Excuse me, sir. you select a polynomial order for which the validation data loss is minimized. And once you have selected the polynomial order, once you learn the parameter of the best polynomial, then you evaluate the model on testing data to generalize, to evaluate the performance कि model कितना generalized है. Reason? सर जब आप पॉलिनोमियल का ऑर्डर चेंज करें तो फिर तो आप पॉलिनोमियल ही चेंज कर रहे हैं पूरा, तो लाइक हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग? How is it? सर जब आप ट्रेन करे थे तब भी आप मॉडल फाइंड आउट कर रहे थे ना, तो यहाँ पर भी जब आप मॉडल की पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज करते हैं तो आप इसीलिए तो पूरा पॉलिनोमियल ही चेंज कर रहे हैं, तो इसमें और वैसे ट्रेनिंग में क्या फर्क हुआ फिर? जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें फर्क ये है कि हम जो पैरामीटर हाइपर पैरामीटर सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, इसमें हम दो चीजें लर्न कर रहे हैं, हाइपर पैरामीटर और पैरामीटर्स। सो H belongs to this capital H. इस कैपिटल H के अंदर डिफरेंट हाइपोथेसिस क्लास हैं, राइट? इसमें ओके आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास जो डिफरेंट ऑर्डर के पॉलिनोमियल हैं वो डिफरेंट हाइपोथेसिस फंक्शंस हैं। Okay, let me explain. Go back. Okay, यहाँ पे आपने किया this one. Here you have not taken into account the generalization. अगर मैं polynomial regression यहाँ पे लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? It will give me a polynomial that is best fitting all the points or highly overfitted A star. Right? जो कि जब मैं यहाँ पे आऊंगा टेस्टिंग डेटा के ऊपर तो यहाँ मुझे बहुत खराब लॉस दे रहा होगा, and then I have to go back and change hypothesis class. To avoid this, मैंने जनरलाइजेशन को यहाँ पर ही इनकॉर्पोरेट कर दिया इसी स्टेप के अंदर कि ड्यूरिंग लर्निंग I have incorporated the finding of best hyperparameter for my model. जी हमजा? Sir, basically these are mini test phases that you have incorporated during your learning for the fine tuning of your basically model. Yeah, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। So सर बेसिकली इसमें सिर्फ कोएफिशिएंट्स वगैरह नहीं आ जाएंगे, लाइक ऑर्डर तो काफी मतलब पूरा पॉलिनोमियल बदल जाएगा उससे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सो हम बेसिकली H स्टार फाइंड करना चाह रहे हैं, एंड H स्टार इज वी वांट टू मिनिमाइज say given H. So this H star we want to incorporate कि यहाँ पे हमारे पास different polynomials H हैं, this H could be if you give 7 points say to this problem, the loss to minimize हो रहा होगा वो तो हमेशा x7 पे जाके minimize हो रहा होगा क्योंकि वो सब पॉइंट्स को बिल्कुल बेस्ट फिट कर लेगा पॉलिनोमियल, but that's not a good polynomial. That's why we have incorporated, we have separated data, we have further separated training data into two parts, training and validation. Right? And as Hamza said, we're using mini test phases, right?
हम ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ट्रेन करेंगे एंड वी वैलिडेट परफॉर्मेंस ऑन द वैलिडेशन डेटा। जो लॉस जो होगा वो इस तरह होगा, ऑर्डर और एप्सिलॉन ऑन ट्रेनिंग, एप्सिलॉन on validation. So epsilon validation would look like sorry. And epsilon training looks like it already decreases to 0. So that is the sense of using validation data. It is used to tune the hyperparameters of the model. How do we split data into validation and training? So often we use the cross validation. हम training split करते हैं. We use up to 5-fold cross validation or 10-fold cross validation. Okay, what's the idea? 5-fold cross validation, we split data into say 5 parts. So we use 4 parts for training, 1 part for validation, and then we use other 4 parts for training and the 1 part for validation, and so on and so forth. Right? Or this is called 5-fold cross validation. हमने validation process को भी generalize कर दिया. Right? There's a possibility that some data variation are being captured by some part of the data, and therefore we use this cross validation concept. हम इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे, but it's just first glimpse के cross validation क्या होती है. So far we know why do we carry out train test split, and we further split training into training and validation. And often we use 5-fold cross validation or 10-fold cross validation. Whenever you're running some algorithm, so there's an option कि आपने 5-fold use करनी है, 10-fold use करनी है cross validation के लिए. ठीक है जी. Any questions? Sir, I wanted to ask, जो validation data है, is this something that we only use for, let's say, linear, polynomial regression, या फिर like हर किस्म की learning के लिए use होता है? ये हर किस्म की learning के लिए use होता है. For example, in neural networks, we want to find a number of hidden neurons. We use validation data. Or in classification, if we want to find the number of nearest neighbors, or if we're using support vector machine, कि उसने अपने kernel का order का use करना है to model non-linearity, we use cross validation. Okay, sir. इसके बारे में बात करते रहेंगे बाद में, but this is just an overview of supervised learning. अब हम बारी-बारी different algorithms के बारे में बात करेंगे. We will start with k nearest neighbor, which is one of the simplest algorithms for classification. And after KNN, we will start with regression. And after regression, we will come back to classification again. And we'll talk about logistic regression, naive-based, support vector machine, and then finally neural networks. ठीक है जी. जी क्वेश्चन सर मैंने ये क्रॉस वैलिडेशन से चीज पूछी थी सर. यहाँ पे सर जो आपने बेसिकली पहला फॉर एग्जांपल ये 5-fold क्रॉस वैलिडेशन को अगर मैं देखूँ सर, यहाँ पे एक इंडिविजुअल कॉलम मेरे पूरी मतलब टेस्ट फेज है सर. अगर मेरे पहले पूरी टेस्टिंग के बाद अगर मेरे लॉस मेरा कम ना हुआ तो सर फिर जब मैं अगला अपना क्या नाम है बनाऊंगा क्रॉस फोल्ड अपने दोबारा स्प्लिट्स करूंगा, तो सर क्या मैं अपने मॉडल को अनट्रेन करूंगा ऑफ सॉर्ट्स, क्योंकि वो तो पहले वही डेटा सेट्स पहले देख चुका भाई इन प्रीवियस ट्रेनिंग फेज, तो उसको तो पहले से उसके आंसर्स वगैरह ये नहीं पता होंगे, तो ऑटोमेटिकली उस पर लॉस बहुत कम दे देगा, लेवल्स पता होंगे. जी जी, आप उसको अनट्रेन करने वाले. ठीक है, ठीक जी. सो बेसिकली हुआ ये कि आप उसको इस बिट के ऊपर रन करेंगे और यहाँ भी रन करेंगे. ठीक है.
So यहाँ पे आपको मिल रहा होगा वैलिडेशन लॉस, राइट, जो कि लॉस है, जो लॉस उस तरह आया कि आपने इस ब्लू के ऊपर ट्रेन किया और रेड के ऊपर आपने उसको वैलिडेट किया, फिर आपने इसके ऊपर भी इस तरह वैलिडेशन लॉस निकाला, दूसरे के ऊपर भी, राइट। लेट्स कॉल इट V1, V2, V3, V4 and V5, and validation loss would be average of these. You treat all these 5 independently. आप blue पे train करें, red के ऊपर आप validate करें, and you find a validation loss. And overall validation loss would be the average of these 5 validation losses. Okay, sir. Thank you. ठीक है जी, चलें, we stop here. I think Fatma is here, should be. Let me check with her. So let me stop recording.